Good morning, everyone. In the last lecture, we discussed the methods of synthesis of nanoparticles, जिसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक था हमारा टॉप डाउन और एक था बॉटम अप. ओके, अब आता है हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स. फर्स्ट एप्लीकेशन इज सनस्क्रीन एंड कॉस्मेटिक्स. This is the very most popular application of the nanoparticle. I think you all are aware of this application, right? तो सनस्क्रीन एंड कॉस्मेटिक में जो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी नैनो पार्टिकल्स का यूज आ रहा है, the applications of nanotechnologies and nanomaterials can be found in many cosmetic products, including moisturizers, hair care products, makeup, and sunscreen. Almost all the major cosmetic manufacturers use nanomaterials in their products. In cosmetics, there are currently two main uses of nanotechnologies: sunscreens and some anti-aging products. ओके, जो सनस्क्रीन और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनमें मेनली हमारे नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है. इन कन्वेंशनल हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन, micro size particles of titanium oxide and zinc oxide are used and the cream appears white and thick. However, if smaller nano size particles are used, the sunscreen becomes transparent to the naked eye while still reflecting UV rays. This nano sunscreen therefore has the same high protection but is no longer a thick white substance. Rather, it is transparent and thinner. It absorbs better and can be evenly distributed, offering excellent protection. जो कन्वेंशनली जो सनस्क्रीन थी उसमें माइक्रोसाइज पार्टिकल जिसमें यूज लिए जाते थे वो मोस्ट जो व्हाइट कलर की थिक होती थी, पर अब जब नैनो पार्टिकल्स का यूज लेने लगे तो आप देखोगे कि जो सनस्क्रीन है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है और बिल्कुल थिक नहीं होती है ना, और प्रोटेक्शन उतना की होती है. नैनो सेंसर. Our modern lives rely on sensors to allow society to run smoothly. Sensors in the road detect cars at traffic lights and adjust the flow through intersections accordingly. Sensors at shopping malls detect your presence and open doors to allow you to enter. Sensors measure the water level in your washing machine and ensure it doesn't overflow. Nano sensors are platforms with the characteristic dimension nanometer in scale and work in much the same way as a sensor. They detect either minute particles or minuscule quantities of something. Nanosensors are chemical or mechanical sensors that can be used to detect the presence of chemical species and nanoparticles or monitor physical parameters such as temperature on the nanoscale. They find use in medical diagnostic applications, food and water quality sensing, and other chemicals. अभी आप देखोगे हम कितना मतलब डिपेंड हो गया है सेंसर्स के ऊपर. सब जगह आप देखोगे, शॉपिंग मॉल देख लो, आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप सामने ले रहे हो उनके अंदर आप देख लो तो वी आर यूजिंग द सेंसर. ओके, तो जो नैनो सेंसर है जो नैनो स्केल पर भी काम करते हैं, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को माइन्यूट क्वांटिटीज में वो जो अगर कोई चीज है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, केमिकल पैरामीटर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, तो इस वजह से इनका मेडिकल डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में काफी यूज आ रहा है, फूड वाटर क्वालिटी सेंसिंग में, और इस तरीके से काफी यूज आ रहा है. देन नैनो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आर अ ग्रुप ऑफ मटेरियल दैट गेट अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोग्रेस फास्टर. ऐसा हमको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को फास्टर करता है. ओके, catalysts are involved in 90% of all commercially produced chemical products at one stage or another in the manufacturing process, from fertilizers to fuels, as well as consumer products such as furniture and food. Catalysts enable the conversion of many resources into products with a minimum of energy consumption and waste. With catalysts, you can make expensive processes cheaper without being consumed in the reaction. Therefore, the importance of catalysis in industry and the environment is incredibly high. Then controlled particle size is important. अब अगर हम कैटलिस्ट यूज में ले रहे हैं to make the reaction faster, so the size of catalyst has an enormous impact on the catalytic properties as the catalytic reactions typically occur on the surface of the catalyst. Nanomaterials are characterized as having structural components with at least one dimension less than 100 nanometer. The smaller the particle, the greater the proportion of atoms on the surface. आप देखो जो कैटलिक रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होती है. जितना पार्टिकल की साइज स्मॉल होगी उतना ही क्या होगा, ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स ऑन द सरफेस. सरफेस पे एटम का प्रोपोर्शन क्या होगा, बढ़ेगा.
For example, a nanoparticle with a diameter of 30 nanometer has approximately 5% of its atom on the surface, while a particle of 3 nanometer has about 50% of its atom on the surface. 30 नैनोमीटर अगर साइज है तो 5% आपको सरफेस पे एटम मिलेंगे, 3 नैनोमीटर साइज है तो 50% आपको सरफेस में मिलेंगे. This means that nanoparticle have a much larger surface area per mass compared to larger particle. For that reason, industrial catalysts are most often produced as nanomaterials. सरफेस जो रेशियो बढ़ रहा है, प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, एटॉमिक रेशियो बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज छोटी होती जा रही है, इसलिए हम नैनो कैटलिस्ट का यूज भी जो है बढ़ता जा रहा है. देन वाटर ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंट. Most toxic dyes used in textile and leather industries can be captured with nanoparticles. Absorption processes using materials containing magnetic nanoparticles are highly effective and can be easily performed because such nanoparticles have a large number of sites on their surface that can capture pollutants and don't readily degrade in water. Magnetic nanomaterials can be used to separate pollutants such as arsenic, lead, chromium, and mercury from water. In addition to removing dyes and metals, nanomaterials can also be used to clean up oil spills. Scientists across the globe are developing nanomaterials that can be efficiently used carbon dioxide from the air, capture toxic pollutants from water, and degrade solid waste into useful products. Nanomaterials could help us mitigate pollution. They are efficient, a catalyst, and mostly recyclable. Now they have to become economical for commercialization and better to replace present-day technologies completely. पॉल्यूशन कंट्रोल करने में भी हम नैनो जो मटेरियल्स हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं और बहुत अच्छे कैटलिस्ट है, रिसाइक्लेबल है. ठीक है, बस अगर ये इकोनॉमिक रेंज में आ जाए तो जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. Then nano coatings and paints. The term nano coating refers to nanoscale, that is with the thickness of a few tens or to a few hundreds of nanometers. Thin films that are applied to surfaces in order to create or improve a material's functionalities such as corrosion protection, water and ice protection, friction reduction, anti-fouling and antibacterial properties, self-cleaning, heat and radiation resistance, and thermal management. Zinc oxide is used to have UV resistance in both coatings and paints. Nano-sized Al2O3 particles are used to make surface scratch resistant. These surfaces are also prevent the accelerated formation of bad smells, fungus, and mold. Then food and agriculture industry. The agricultural sector is dealing with enormous challenges such as rapid climate changing, a decrease in soil fertility, macro and micronutrient deficiency, overuse of chemical fertilizers and pesticides, and heavy metal presence in the soil. However, the global population increase has subsequently escalated food demand. Nanotechnology has immensely contributed to sustainable agriculture by enhancing crop production and restoring and improving soil quality. नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज आ रही है. आप देखो जहाँ सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, इट इज यूज टू इंक्रीज द सॉइल क्वालिटी. Nanotechnology is applied in various aspects of agriculture. For example, nano-pesticide delivery, slow and controlled release of nanoparticles containing biofertilizers, transport of genetic materials for crop development, applications of nanobiosensors for rapid detection of pathogens and other biotic and abiotic stresses. तो अभी आपने देखा इतने सारे यूज है नैनो मटेरियल्स के, नैनो पार्टिकल्स के. जरूरत है अब इसकी इकोनॉमिक रेंज में आने पर सो दैट दे कैन बी यूज कमर्शियली एट अ लार्ज स्केल. ठीक है, अभी भी काफी यूज हो रहा है, काफी चीजों में ये काम आ रहा है. कॉस्मेटिक में आपने देखा, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपने देखा, कोटिंग्स पेंटिंग्स में आप पेंट वगैरह में आप जो देखते हैं एंटी कोरोजन जो सब्सटेंस बने होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स के बने होते हैं, एंटी कोरोजिव सब्सटेंसेस जो है. ओके, नैनो कैटलिस्ट का यूज आ रहा है. ओके, तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन से था कि नैनो मटेरियल्स जो हैं हमारे किस तरीके से, उनका क्या मतलब, क्यों हम नैनो मटेरियल्स को यूज दे रहे हैं, क्या कारण है कि बल्क मटेरियल क्यों नहीं यूज दे रहे हैं. तो हमने देखा कि बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल पर जाते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज में बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है. सेकेंड थिंग हमने देखा उसके टाइप्स देखे, सिंथेसाइज के मेथड्स देखे, देन उसकी कहाँ पर अभी तक हमने इसको यूज कर चुके हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ये यूनिट आपकी आज खत्म होती है. थैंक यू एवरीवन.